لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, bless your life, bless you with everything. Alhamdulillah, wedding is one of the greatest gifts that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And in fact, it is one of the signs of Allah's existence. As Allah said in the Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. From the signs of His existence that Allah has created for you, spouses among yourselves. And Allah says the reason of that is you find peace and tranquility. And Allah subhanahu wa ta'ala made between the spouses love and kindness. So alhamdulillah Rabbil Alameen, that Rabbi has gathered us in this very great month of Muharram, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said is a great month. لنفسي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمهر المسمى بيننا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Your husband and wife, may Allah bless you, bless your life. May Allah subhanahu wa ta'ala put a lot of barakah in your life. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you joy and happiness. May Allah be blessed with the righteous kids. May Allah subhanahu wa ta'ala make you closer to Him. May Allah make this wedding a barakah for you and for your families, for your country, and for all the people out here. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. यार अंकल ही बैठे मेरी बेटा और हमारा और ये सैफ अंकल भी इधर हैं, मनीज़ा आंटी भी इधर हैं और सारा भी इधर हैं, खालिद भाई भी हैं, वो अस्मा खाला है और ये देखिए ये माशाल्लाह ये सारा सेटअप है जी। ये हुसैन में बैठे हुए हैं, वो शाह सान भाई देखिए माशाल्लाह सारे मम्मी भी हैं और ये मेरी आपाएँ बैठी हैं सामने।
आपको लाइव दिखा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, bless your life, bless you with everything. Alhamdulillah, wedding is one of the greatest gifts that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, and in fact it is one of the signs of Allah's existence, as Allah said in the Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. From the signs of His existence that Allah has created for you spouses among yourselves. And Allah says the reason of that is you find peace and tranquility. And Allah subhanahu wa ta'ala made between the spouses love and kindness. So Alhamdulillah Rabbil Alameen, that what has gathered us in this very great month of Muharram, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said is a great month. لنفسي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمهر المسمى بيننا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Your husband and wife, may Allah bless you, bless your life. May Allah subhanahu wa ta'ala put a lot of barakah in your life. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you joy and happiness. May Allah bless you with the righteous kids. May Allah subhanahu wa ta'ala make you closer to Him. May Allah make this wedding a barakah for you and for your families, for your family, for all the people out here. Barakallah fiikum. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. अंकल भी बैठे हैं बेटा बहुत मुबारक। और ये सैफ अंकल भी इधर हैं, मनीज़ा आंटी भी इधर हैं और सारा पर भी इधर हैं, खालिद भाई भी हैं, वो अस्मा खाला हैं और ये देखिए ये माशाल्लाह ये सारा सेटअप है जी। ये हुसैना बैठे हुए हैं, वाइफ का एहसान भाई देखिए माशाल्लाह सारे मम्मी भी हैं और ये मेरी आपाएँ बैठी हैं सामने। Pretend for us. But there are more to sign. You can pretend for us. Yeah, that's fine.
रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।